क्यों? क्योंकि आज की तारीख पे छोटे जो ड्रोन्स हैं वो उनकी नजर में आते हैं। तो हमें आज की तारीख में काबिलियत चाहिए जो छोटे ड्रोन्स देख सके और छोटे ड्रोन्स को एंगेज कर सके। तो ये जो हमारी एयर डिफेंस यहां से शुरू होती है। उसके अलावा आपको पता है कि क्यू और सैम जो मॉडिफाइड है, आकाश प्राइम आपको पता है जिसपे हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से LR सैम भी कार्रवाई हो रही है। और ये सारी जो हैं, ये सुदर्शन चक्र जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया था, ये उसके तहत शामिल हो जाएंगे। और इस चीज को हमारी DRDO देख रही है, जिसमें कि सोर्ड एंड शील्ड का कॉन्सेप्ट है, यानी देखो, उसको एंगेज करो और डिस्ट्रॉय करो, तीनों चीज उसमें शामिल होंगी। और इसमें हमने एक हमारे ब्रिगेडियर भी वहां पे DRDO में पोस्ट कर दिए गए हैं, जो इस चीज में पूरी प्लानिंग स्टेज से शामिल हैं, ताकि सुदर्शन चक्र जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो हर जगह पर उसमें आर्मी, एयरफोर्स और समन्वय रहे नेवी के साथ भी। Alright, 79, 11 and 12. Good afternoon, sir. I am Shivani Sharma from India Today. Where are you? Sir, Yes, this side. she's here. Okay, Sir, we had seen that after Pahalgam attack and prior to Operation Sindoor, there were a number of ceasefire violations along the line of control. After Operation Sindoor, is there a change in the pattern of ceasefire violations and terror launch pads across the line of control? And your insight on the recalibration of forces south of Peer Panjal? So this is Manu Pabi from the Economic Times in the middle, sir. Sir, can you tell us a bit more about your budget priorities? Budget is upcoming. There's a lot of changes which the army has gone through. And what kind of money are you seeking more? And what will the spending priorities be in the coming years? Sir, Rahul Singh this side from Hindustan Times. Sir, you talked about the gradual normalization of the situation along the northern borders. But, and efforts being made by both sides to kind of keep things calm. And in this context, when, China has reiterated again that Shaksgam Valley is a part of their territory, how do you see these comments in with respect to the situation along the northern borders? Thanks. Okay. So, Shivani ji, you have asked basically about the ceasefire violations. So, let me tell you that in 2025, there were 139 ceasefire violations which took place. But majority of them were basically during the 124, if I can say that specific, but during the Op Sindoor. And the balance one which are there were minor ones. What happens when a new unit comes? By the time, at times, if you have served in, of course, you won't have served in LC, but what I'm saying is, in line of control, when the tree also moves, it looks like that people are coming to attack you. So when the new unit, especially in case of Pakistan, the new unit moves, they are generally at times scared and they carry out a prophylactic firing. In our terms, prophylactic firing will also be looked at as ceasefire violation. So that is the kind of ceasefire violation has taken place. Otherwise, no major ceasefire violation has taken place. The second issue, what you have asked, is recalibration of forces south of Peer Panjal. So as far as forces are concerned, as of today, we are not relenting at all. No forces are coming back because, in my wisdom, today 140 approximately still the terrorists within the hinterland are likely to be there, out of which only 10 could be the local terrorists, rest all could be the Pakistani terrorists. If that be the case, I cannot sit at rest. Therefore, we are not relenting at all, and the forces which were placed there, in addition, those forces are still there, and we will not back down as of today. Manu Pabi ji asked the question about the budget. So I would like to just tell you that this time we are hoping for some increase in the budget. Because if Atmanirbharta is the clarion call, then the Indian industry also has to be reassured. That is point number one. The second issue is the budget last year, if you see that capital acquisition, we were given a particular number, but finally we landed up signing somewhere 80,000 crores. And this was LCH itself was approximately 40,000 crore. What it means that as the government is concerned, government has said that if you wish to spend money and you got a scope, don't worry on that. We will get you the money from somewhere. For example, this time also 33,000 has been given out. We may have signed approximately 20 approximately, but we are looking at finally reaching 50. And government is assured, don't worry. As far as we are concerned, we should be able to give it to you. That is the assurance which has been given. Your question is, what are the priorities what we are looking at?
So the priorities, if I have to look at, firstly, I have divided battlefield awareness because what I said, force visualization, force application and force preservation. These are the three pillars I always look at. So battlefield awareness will give me the force visualization as well as where to apply and where to preserve. Command and control. So somebody rightly asked, as far as the artificial intelligence is concerned, it's firstly the OODA cycle which is there. It gets enhanced and much faster because of this command and control. So we are paying a major attention to that. Force application I've already told you, and preservation and protection. Because now the non-state actors also have today access to a lot of technology which can be used for attack. Therefore, the domain of protection and preservation, which was only, let's say, for the military, now we also look at the civil side. We saw in Punch that how they targeted our Gurdwara and other places. Therefore, I need to protect and preserve that also. Therefore, I need to spend money towards that side also. And of course, sustenance and support, which is an ongoing factor. It's more applicable to the army because it's a large army, and our revenue expenditure, even for sustaining in terms of ammunition, arms, and the equipment, including kitting, comes from the revenue. Therefore, it will always remain very high for us. So this is as far as your question is concerned. Then Rahulji, you asked about the Northern Front and about the Shaksgam Valley. So as the Shaksgam Valley is concerned, India considers 1963 agreement between Pakistan, China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. And in this terms, MEA has already issued the statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. Right, ladies and gentlemen, we are coming to probably the last set of questions. So we'll have 63, 68 and 80. सर मेरा नाम अनुवेश रथ है, मैं जी मीडिया ग्रुप से हूं। सर मेरा सवाल ये है कि पिछले साल हमने देखा आपने काफी अच्छे ऑपरेशंस किए, उसी के साथ साथ काफी चीजें डीएसी और बाकी एओएन वगैरह आए, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि कई सारे प्रोक्योरमेंट्स जो होते हैं वो काफी डिले होते हैं। वहीं पे जिस तरीके से ग्लोबल हालात चल रहे हैं, आपको कई सारे जल्दी प्रोक्योरमेंट लेने पड़ेंगे। किस तरीके की बैलेंसिंग आप इसमें करेंगे, क्योंकि इस बार बजट में आपको मतलब तीनों सेनाओं को लगभग 80,000 करोड़ एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जा रहा है, कैपिटल एक्विजिशन के लिए दिया जा रहा है। Shinjoy, your mic is not working. Please give him another mic. So, this was in Hindi or English? Hindi. English. Anush. Hindi? Yes, sir. So, there's been a lot of talk about the Striker. Is the army interested in the Striker? And also, sir, in the last DSE, there was this huge consignment of tanks that were going to be overhauled. Very, very large number. Now, as far as the previous case was concerned with the earlier batch, there seemed to be some unhappiness about it in terms of quality, in terms of time. So could you just tell us where it stands? And also this rocket force that you spoke of. Shinjoy, I'll request, we are at the fag end now. Otherwise, others will not get a chance to ask a question. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. सर मैं हरेन चौधरी रक्षा समाचार से। सर सर मेरा सवाल है कि आर्टिलरी को लेकर के रेंज बढ़ाने की बात हो रही है और आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली अभी कहा है कि हम रेंज बढ़ाने वाले हैं। तो भारतीय सेना कब दुनिया की पहली सेना बनेगी जो एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी जो रैमजेट इंजन के साथ होगी वो जो है इंडक्ट करेगी, कब तक ये होगा? और दूसरा सवाल मेरा जोरावर टैंक को लेकर के है सर, उसका भी क्या स्थिति है और कब से उसके यूजर ट्रायल शुरू होंगे और कब भारतीय सेना में शामिल होगा? थैंक यू। ओके, तो पहले मैं रक्षा समाचार का सवाल लेता हूं। जहां तक आरटी रेंज का सवाल है, आरटी रेंज जैसे आपने बताया कि
आप सिर्फ आरटी गन की बात कर रहे हैं, और चूंकि आरटी गन की बात कर रहे हैं तो इसमें जहां तक मैं खुद वहां पे आईआईटी मद्रास गया था, मैंने उनकी वहां पे प्रोग्रेस देखी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो काफी एनकरेजिंग प्रोग्रेस है। और अभी टाइमलाइन तो उसमें हम फिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइमलाइन बताना बहुत मुश्किल होता है, बट ये है कि काफी प्रोग्रेसिव फीडबैक आया है और रैमजेट टेक्नोलॉजी जैसे ही आएगी हमें लॉन्गर रेंजेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और इस रैमजेट टेक्नोलॉजी को मार्टी गन्स पे फिर नहीं रोकेंगे। फिर जहां तक हमारे पिनाका जो हैं, तो पिनाका रॉकेट में भी अगर हम इसको लगा सकते हैं तो हमें इससे ज्यादा रेंज मिलने का फायदा होगा। और ये रैमजेट टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आगे भी इस्तेमाल होती रहेगी। उसी प्रकार से डीआरडीओ भी इस टेक्नोलॉजी पे काफी काम कर रहा है। तो मेरा तो सोच विचार ये है कि 2026 के सेकेंड हाफ में हमें इसमें काफी सफलता हासिल हो जानी चाहिए। दूसरा आपका सवाल था जोरावर टैंक के बारे में। तो जोरावर टैंक अभी तक सिर्फ एक बनाया गया है जो कि हाई एल्टीट्यूड में अभी डिप्लॉयड है। उसमें कुछ कमी पेशी आई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है, और हाई एल्टीट्यूड में चूंकि और भी नए फैक्टर्स आते हैं और इन सारी चीजों को फिर आपने रिपेयर करने के लिए नीचे लाना पड़ता है। तो चूंकि अभी वो नीचे नहीं आ सकता है तो एक दूसरा हजीरा में एक टैंक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है जो कि अभी हम वेस्टर्न बॉर्डर्स में उसको ट्रायल्स के लिए भेज रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये इसके काफी हद तक इसका प्रोटोटाइप बन चुका है, बट जो छोटे मोटे जो इसके मेजर असेंबलीज हैं उसमें जो खामियां आती हैं उसको दूर करने में भी वक्त लगेगा, इसलिए इसमें टाइमलाइन फिक्स नहीं की जा सकती। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि 2029 के आसपास अगर इंडक्शन शुरू हो जाएगा तो उसका काफी फायदा होगा। Then moving on to Srinjay, you asked about the Striker and the tank overhaul. So the Striker is concerned, it is one of the options we are looking at because we need a platform. We should be able to utilize it very well in the northern front. And it should have all the capabilities in terms of protection, in terms of firepower, in terms of mobility. So if there's an Indian option to it, we will prefer to go for Indian option. If not, then definitely we are looking at other options also. Striker is also one of those. Coming on to the second factor, what you asked for is about the tank overhauling. So what we understand that because of the force majeure factors, some spares which were required to be provided to the AVNL from the OEM could not come in time or got delayed. As a result, the overall has got some slippages. Secondly, AVNL did not have that much of capacity which we were supposed to be having. So this time what we have done, we have also taken the help of 505, the Army Base workshop which is there. And this workshop is also carrying out parallel repairs or the overhauls at this place also. So what we are looking at the PSU, we are looking at Army Base workshop, and if there is an industry which is ready to come forward and help us out, we will be surely ready to reach out to them and give them the contract also. But I can just assure you it does not affect in any way our operation efficiency because we take this corrective action at the right point of time. It does not mean that the equipment is not usable in that particular time. As far as the quality is concerned, I do not have any reports of any quality. Some infirmities can always be there, which is something the corrections will take place, which is acceptable to us. Time slippages are there. Yes, I agree with you. And we are taking corrective actions towards that side. Moving ahead, I think all three is answered. All three have been answered. Okay. Thank you. Sir, we are nearing the end. Probably we have got 3 more minutes. We'll take probably one question or two. Okay, one set. We can have 96, 88 and 165. Okay, we'll come to that, man. 96, where is 96? 96. Yes, please ask. सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। सिंदूर से ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश में फेमस हो गया और हर बच्चा ऑपरेशन सिंदूर की बात करता है। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में टर्निंग पॉइंट क्या था हमारे लिए? Okay, 88. या ऊपर दीजिए। सर, शिखा ठाकुर फ्रॉम भारत 24। सर, हमने देखा है कि नैरेटिव्स की लड़ाई हो रही है और एक तरफ बॉर्डर पे वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ हेडलाइंस और हैशटैग्स में। अभी एशियन रिपोर्ट्स ने एक न्यूज पब्लिश की है जिसमें उन्होंने कहा कि चाइनीज एयरक्राफ्ट J-10 उसको ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सक्सेसफुली एम्प्लॉय किया गया। इस तरीके के जो नैरेटिव्स है सर, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर है, उसको कैसे हम केटर कर सकते हैं?
last one, 165. So Bipindra here, sir. I'm an independent journalist. So you talked a lot about the Northern Front, sir. There is one thing that I wanted to ask you about the Northern Front, which is in October 2024 when the agreement was signed for disengagement. There were also two more steps that were to be done, which is disengagement and de-induction. Three-step process was to be maintained. At what process? Currently this LAC disengagement exists at this point in time. And also, sir, world over we are seeing that the conflict is drone driven. Basically, the drones are sort of shaping the battlefield. Effects that happen, and air littoral is becoming a very important space, and control of air littoral is also a big question mark as far as the Indian force structures are concerned. So, would you throw some light on what is the thinking of the army on the air littoral control and command and control structures? So 88 भारत 24 आपने पूछा था कि ये जो बहुत सारी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, इसको आप काउंटर कैसे करते हैं। जहां तक ये सवाल है, सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत सारी चीजों पे अगर आप ना भी रिएक्ट करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ही रह जाएंगी। तो क्या होता है, प्रोफेशनल्स जो हैं इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी चीज में सच्चाई है, अगर उसमें कुछ सच है, तो उसको हम फिर डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके काउंटर एक्शंस लेंगे। बट आज की तारीख पे ये जो साइकोलॉजिकल चलता है, ये इसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया वॉरियर्स। इन वॉरियर्स के बीच में ही जो बिना तलवार के लड़ते हैं, वो बिना तलवार की लड़ाई वहीं पे सीमित रहे तो अच्छा है। काउंटर के लिए जो कार्रवाई थी उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत कुछ कार्रवाई हम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में करेंगे ही। जहां भी आपको डाउट होता है, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे या एडीजी स्ट्रैटकॉम को ट्वीट करके भेजिए, वो जरूर उसका जवाब देंगे और आपको सही चीज बताएंगे। रही बात हमारे अक्टूबर 24 का, आपने पूछा डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन के बारे में आपको क्या कहना है। तो जहां तक डिसएंगेजमेंट का सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 21 अक्टूबर को जो हमने आपस में एग्रीमेंट किया था, उसके तहत जो भी कार्रवाई करनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अभी बात आती है कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि WMCC है, आपने इंग्लिश में पूछा था, ओके। सो एज वी ऑलरेडी नो दैट द WMCC इज देयर, वी हैव द स्पेशलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप विच इज देयर, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, एंड ऑफ कोर्स द चैनल्स विच आर ओपन इन टर्म्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। So as a result, what has happened, these expert groups and the working groups have been made. Now we are waiting for the outcome of this expert group and working groups. As these expert groups and working group arrive at a particular logical, synergistic solution, we will start kind of executing them on ground. So we are just awaiting those kind of instructions. This will take some time and we are ready to wait. The second question which you had is drone and air littoral. So, like I told you that 97% of the airspace as far as the air littoral is concerned is being used by the Indian Army. Therefore, it is mandatory for the Indian Army to look at how to control that. What we have done that we have UCC, and this UCC, this control center which is there, Unified Control Center, we are keeping it at the division level. Now, this unified control center, which is a division level, is not only kind of coordinating the drones which military is using it, that is the Army, Navy, Air Force. It is also looking at which is being used by the CAPF. Is it also looking at the drones which is being used by the drone Didis? It is also looking at the drones which is being flown for the agriculture purposes and also for reconnaissance or even for the medical or even, let's say, Amazon and others which are flying the drones. So, during the conventional operations or during the heightened gray zone, this UCC will come into play. But this UCC is not independent. That is working out with the core headquarter, and core headquarter JATC is integrated with the Air Force ISCCS through Akashseer. So everything is integrated, and that's why UCC is working based on a format called as Saksham. And as we go higher, there are already various AI tools which are there. So all these are at a nascent stage for the time being. As they mature, we will see which is the software which is best suited for us, which has got more integrity in terms of being produced in-house, which is scalable.
So based on this, those softwares will be utilized and artificial intelligence from generative will become agentic at later stage. With this, we come to the end of the question and answer No, there's session. a turning point. I think. Who was this turning point? Yeah. आपने पूछा कि ऑप सिंदूर में टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट जो था, दो स्टेज पे देखना चाहिए आपको. सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था. एंड उन्हें वक्त लगा समझने में. एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है. और ये जो मिसमैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था. दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहां पे खुले में ना बता पाऊं, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था. तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएमओ उस टाइम गई साहब थे, तो यहां बैठे हुए हैं, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है. इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है, इस लड़ाई को यहां पे रोकना उचित होगा, उनके लिए फायदेमंद होगा.